We'll continue further, and now our next topic is derive ionization constant for the weak base. Suppose we have weak base called MOH, and when we dissolve this weak base in water, we get M plus aqueous plus OH minus aqueous. For this, let's say in beginning we had concentration of acid, base 0, and as we know, concentration of water remains constant throughout the reaction. We are not going to consider that, and this to a 0. Suppose degree of ionization is alpha, then during equilibrium used होगा and produced होगा. This will be C alpha. This will be produced C alpha and C alpha. Correct or not? And at equilibrium, ये क्या मिलेगा? C minus C alpha, which is equals to C into 1 minus alpha. Correct? And this two will be C alpha, C alpha. Then equilibrium constant equals to K equilibrium equals to concentration of M plus concentration of OH minus upon concentration of MOH into concentration of H2O. H2O will come to this side, and what do we have is K equilibrium into concentration of H2O करेक्ट. इसको हम बोलेंगे KB. M प्लस का कॉन्सेंट्रेशन था C अल्फा, ये था C अल्फा और ये था C इंटू 1 माइनस अल्फा. C gets cancelled. KB equals to C alpha square upon 1 minus alpha, and concentration of OH minus equals to C alpha. जैसे लास्ट टाइम डिराइव किया था वैसे ही डिराइव करना, लेकिन इस बार बेस के बेस पे. इज इट फाइन? यू मे राइट इट. One more illustration from your textbook, illustration number 14. It says calculate the values of NH4 plus OH minus POH pH for 0.1 molarity NH4OH. They said it very clearly. हमको pH POH ये सब फाइंड करना है, ठीक है, बट इट इज अ वीक बेस. हाउ डू वी नो दैट? सबसे पहले NH4OH है. NH4OH talks about base. First thing. Second thing, they had given great reaction. याद रखना, बेस का जब भी आप रिएक्शन लिखते हो, H2O को हम सॉल्वेंट की तरह ही खाली यूज करेंगे जिसके अंदर NH4 प्लस एंड OH माइनस आयोनाइज होके सेपरेट होने वाले हैं, और कुछ नहीं है. NH4OH से, आर यू फॉलोइंग दिस? समझ में आ रहा है? सेकेंड थिंग, molarity KB has been given to you 1.8 10 raised to minus 5. Let's say alpha is degree of ionization. Then what to do is KB equals to C alpha square upon 1 minus alpha, but since 1 is much greater than alpha, या तो alpha is much greater than alpha, whichever way we can write 1 minus alpha equals to, माफ करना 0 मत लिखना, 1 गलत लिख दिया था मैंने, equals to 1. ठीक है. So KB equals to C alpha square. We'll use this information. KB has been given to us is 1.8 into 10 raised to minus 5. C is 0.1.
alpha square. So alpha square equals 1.8 10 raised to minus 4. अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे अंडर रूट 1.8 10 raised to minus 4. Can you give me the answer? 1.34 into 10 raised to minus 2. ये आपको अल्फा मिला. After finding out alpha, we will write concentration of OH minus equals to C alpha. C is 0.1, alpha is 1.34 10 raised to minus 2, which will give you 1.34 10 raised to minus 3 molarity. Whether you use this method or use another method which we know as this way, the method is concentration of OH minus equals to अंडर रूट KBC या तो छत्रीमा KBC. KB आपके पास था 1.8 10 raised to minus 5, ये 0.1 था, और अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के करते हो तो आई थिंक आंसर आना चाहिए 1.34 10 raised to minus 3 मोलारिटी. इधर पे आप कीजिए बराबर है कि आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस POH equals to नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस. बाय द वे उन्होंने NH4 प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन पूछा है. याद रखना NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस. दिस इज इक्वल टू 1.34 10 raised to minus 3 मोलारिटी. करेक्ट और नॉट? आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विल कंटिन्यू फर्दर. विल रिज्यूम बैक एंड POH equals to negative log of OH minus which is equals to negative log of 1.34 into 10 raised to minus 3. Please find the log for me. How much? 2.87. फाइनल आंसर. इसका पूरा log फाइंड करके 2.87 POH मिला. pH equals to 14 minus POH, तो ये मिलेगा 11 पॉइंट आंसर. आप